Kashmir to Kanyakumari, India is a spellbinding mosaic of culture, tradition, languages, and an extraordinary mingling civilization. Keeping its age-old culture maintained, today the country is taking huge strides in the path of development. Hello, I'm your host Hina Joshi, and today in our episode of My India, we bring you some of the stories that will give you a glimpse of our country's diversity. Let's begin the show by taking you to the Gira Waterfall of Gujarat, which is endowed with implausible natural beauty. Known as the Cherrapunji of Gujarat, this waterfall is one of the most picturesque sites in the state and is frequented by a number of tourists every day. Situated in a verdant setting near Saputara hill station, Gira or Gira waterfall is a beautiful seasonal cascade in Dang district of Gujarat. Also known as the Niagara of the state, the waterfall is formed after it emerges from Kapri tributary and falls from 75 feet high cliff, dropping into Ambika river. The speed of water plunging into the river creates a foggy look, giving a very charming feel. Gradually, the waterfall is developing into a popular picnic spot that attracts a number of tourists who are looking for a respite from their daily life. हम आज यहाँ डांग जिला में गिरा वाटरफॉल पे है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, एकदम रॉ नेचर है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और पूरा रास्ता यहाँ अहमदाबाद से डांग तक आने का इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि आपको इंडिया के बाहर जाना ही नहीं ज़रूरत है। इंडिया के अंदर ही इतनी खूबसूरती है कि हम शायद इसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरा सजेशन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने आइटिनरी में एक बार डांग में आने का ज़रूर कोशिश करें। ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ के लोकल भी बहुत ही हेल्पफुल है। और गिरा वाटरफॉल अनडाउटेडली गुजरात का तो मुझे सबसे सुंदर वाटरफॉल लगा है। Gira waterfall can be reached via a jeep ride which is available for hire, but they are only allowed to a point which is 1 kilometer away. Around the waterfall, there are a number of small stalls set up by the tribal artists who sell their traditional arts and handicrafts. One can also grab a quick bite from the eateries present there. हम लोग अहमदाबाद से आए हैं सापुतारा। दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिप एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही फ्रेश है यहाँ पे, एकदम रॉ नेचर है, फुल ऑफ ऑक्सीजन। एक पुल जो बीच में थोड़ा सा टूटा हुआ था, वो भी बहुत जल्दी ये लोग ने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें यहाँ आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। रोड्स वगैरह एवरीथिंग वाज रियली गुड। यहाँ पे मैं जब रास्ते में वापस जब हम आ रहे थे तो हमने देखा बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मग्स बनाए हैं, बोट्स बनाई हैं। दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इसमें अच्छे से देखने को मिलता है। और अभी हम लोग गिरा रोड के सामने हैं। दिस इज़ अगेन रियली ब्यूटीफुल। Owing to the nature of its landmass, which is coupled up with lush green surrounding, Gujarat has an impressive collection of picturesque waterfalls that can put all your stress at bay. India is a land where Sufism has not only flourished in its true spirit, but has also become the way of integrating different religious communities. The unity of these myriad faiths can be very well witnessed at the Dargahs of Sufi saints. Today we take you to the Dargah of Guja Sahib near Pathankot district of Punjab that has been serving as a bridge between different castes and communities. Jam-packed in the small street of the Band Basti in Sujanpur district of Punjab, the shrine of Baba Guja Sahib is a famous sight among citizens of the district. Though the Dargah is a small one, but it is equally revered by people of different religious communities residing in the district.
People from nearby districts of Jalandhar, Majhita, Amritsar and others also visit the shrine to pay their obeisance to the saint. ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਦੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਲਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। Every year, a grand fair is organized to mark the Urus of the saint, which is attended by devotees not only from Punjab, but from nearby states of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir as well. It is said that the saint fulfills the wishes of all and nobody returns empty-handed from here. The Dargah of Baba Guja Peer is a perfect example of communal harmony that is witnessed throughout the length and breadth of our country. पर लिजाया ये दरगाह बाबे गुजे पीर दिया 41 साल हो गए इत्थे भंडारा होंदिया ते 41 साल हो गए आ सेवा करदिया बाबा जी दी। ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ। The solidarity among the different religious communities has remained a hallmark of India's unity since time immemorial. Now, a roundup of some of the major stories that made news recently. A shop in India's northern Lucknow city is selling tricolor sweets depicting colors of the national flag ahead of the country's Independence Day. To mark Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative to celebrate 75 years of independence, around 10 different varieties are on display at the sweet shop that has become a major attraction for customers. तो ये 15 अगस्त का फेस्टिवल भी कि हम एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। अब 15 अगस्त है तो उसके लिए जो मिठाइयाँ और सारी चीज़ें वो कैसी हों, कहीं ना कहीं उनमें हमारे देश का जो अपनी पहचान है, जो हमारा ट्राई कलर है, तिरंगा जो हमारी शान है, वो चीज़ें उससे कनेक्ट हों और हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं, वो उसको अपने को जोड़ पाएँ। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये ट्राई कलर सीरीज़ पूरी निकाली है। Proprietor of Chhappan Bhog Sweet Shop, Ravindra Gupta, said the idea behind preparing such sweets was to reflect the identity of India in them so that the young generation can connect to it. Priests in India's southern Coimbatore city decorated a Hindu temple, an idol of goddess with 800 kilograms of pulses, and prayed to help them fight monkeypox and coronavirus. An 80 feet long snake-shaped structure of Rahu Ketu leading to idol of Hindu goddess Aman was made using 9 types of pulses at the Mahali Aman temple where devotees gathered to offer prayers. The idol of goddess was also decorated on Friday of Tamil month Adi. 800 கிலோவில் 80 அடி நீளத்தில் ராகு கேது அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. உலக மக்கள் இன்புற்று வாழ வேண்டும். ஒரு 3 ஆண்டு காலமாக கொரோனா என்ற தொற்று நோயினால் மக்கள் வாடி வதங்கிவிட்டார்கள். மீண்டும் இந்த 2022 மங்கி நோய் என்று சொல்லக்கூடிய குரங்கு நோய் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இதனால் மக்கள் அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள், பயந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். மக்களுக்கு இந்த நோயெல்லாம் வராமல் இருப்பதற்கு 2020 இந்த நோய் வருகிறது, 2023 இன்னும் என்ன வருகிறது தெரியவில்லை. இதெல்லாம் வரக்கூடாது என்று சொல்லி பெருகிட மாகாளி அம்மனுக்கு இன்றைய நவதானியங்கள் தானிய பயிரினாவே ஒரு முக்கியமான ஒரு அற்புதமான ஒரு பொருள், மங்களமான பொருள். அதை வைத்து இந்த வழிபாடு செய்தால் மக்களுக்கெல்லாம்
இந்த நோய் வராமல் இருக்க வேண்டும் சொல்லி இன்னைக்கு வழிபாடு செய்யப்பட்டது. The structures were made in the shape of snakes, as Rahu is depicted as a serpent's head and Ketu is depicted as having a serpent's body. The pulses were to be distributed later to the devotees, who will sow it in the fields and grow plants. India's northern Varanasi has emerged as a smart city with its roads adorned with sculptures and artistic installments made from recycled scraps of waste materials. Installments ranged from a depiction of India's iconic freedom fighter Mahatma Gandhi to butterflies, a globe, elephants, and Kathakali dancers. नगर निगम के पास काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल, स्क्रैप व्हीकल्स, ट्रॉलीज, अन्य सामान जो है लोहे का, प्लास्टिक का सब जमा हो जाते हैं, टायर्स वगैरह के। तो हमने सोचा है क्यों ना इसको एक आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। Indian Prime Minister Narendra Modi, who was elected in May 2014 to represent the 3,000-year-old riverside city of Varanasi, took personal responsibility to upgrade the holy city into India's one of the first smart cities. The Indian government aims to create 100 smart cities. Some of the existing ones besides Varanasi are Udaipur, Bhubaneswar, Ahmedabad, Surat, Indore and Bhopal. Festivals in India are all about merrymaking, colour and togetherness. The occasion of Rakshabandhan not only ties Hindu brothers and sisters in a knot of love, but is also a symbol of communal harmony. In today's episode, we will bring you how the members of Muslim community are becoming a part of this festival. For many years, India has been giving a whole new meaning to festivals as people from different religions, backgrounds, caste and creed collectively celebrate events belonging to a particular group or ethnicity. Collectively celebrating the festival of Rakshabandhan, two Hindu sisters have been tying Rakhis on the wrists of their Muslim brothers. This tradition has become a medium to strengthen the bond between two communities and symbolize the fact that the bond shared by brothers and sisters is above any religion or caste. लगभग 10 वर्ष से तो हमारे भाई से हैं परिचित, तो हम लोगों को मतलब यहाँ पर रहते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। और हमारे बीच कभी भी कोई हमारा त्यौहार हुआ, कोई भी पर्व हुआ, तो भाई हमेशा हमारे मोहल्ले के लोग जो भी मुस्लिम हैं सब शामिल होते हैं, सब खड़े होते हैं। उनका कुछ होता है तो हम सब हिंदू भाई जाकर खड़े होते हैं और कोई हम लोगों के बीच में भेदभाव नहीं है। और कभी भी मतलब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो एक हमारे हिंदू भाई से पहले हमारा मुस्लिम भाई हमारे लिए खड़ा होता है और लोग बहुत हमको मानते हैं, तो हम वाकई दिल से लोग भाई मानते हैं। Meanwhile, in Siliguri city of West Bengal, Muslim vendors have been selling Rakhis for years as mark of love and brotherhood shared between the two communities. These traders bring Rakhis from Delhi, Lucknow, Kolkata and contribute to the festivities of the Hindu festival. आकर लगभग 20 साल से हम लोग ये बिजनेस करते हैं और ये रक्षाबंधन जो है हिंदू भाई को पर्व है। हाँ, हम लोग के अच्छा लगता है, दुकानदारी करता है तो मुस्लिम भाई के भी मुहर्रम है, सब भाई भाई है, सब मिल के काम करता है, मिलजुल के रहता है। अच्छा होता है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, अच्छा होता है। हम लोग सब भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर सब भाई भाई है, मिलकर जुलकर रहना चाहिए। In India, Rakshabandhan is celebrated for ages and has many tales associated with it. Sisters tie sacred thread on their brother's wrist and wish for their well-being and prosperity. Moving on. India will soon be few among the world economies having 5G internet speed.
The country's first ever auction of 5G spectrum concluded recently in New Delhi, with spectrum worth 1.5 lakh crore being sold. In a few months, the people in many cities across India will get the facility of 5G network that will help in overall growth of the economy. We have a report. New Delhi has embarked upon another extraordinary journey. India recently auctioned its 5G spectrum. The license is for the most advanced telecom speed for a whopping 19 billion USD. This comes as the world's major economies scramble to engage in a fierce cellular speed battle, especially in the backdrop of China's vigorous attempts to dominate the global cellular space. New Delhi's strained relationship with Beijing, especially in the wake of China's violent infiltration into Indian territory in June of 2020, has kept Chinese telecom giants Huawei and ZTE away from the auction for the coveted 5G licenses. The Indian government is hopeful that the country should be able to roll out the fifth-generation network in a few months, and anticipates that the network will cover a significant geography within the next few years. October में we should be able to launch 5G in the country, and given the response, we understand that within next 2 to 3 years there will be a significant coverage of 5G in the country. The largest chunk of the 5G spectrum, the network which is claimed to be 100 times faster than the existing 4G service, has been secured by the Reliance Jio network. Other competitors including Bharti Airtel, Vodafone Idea Limited, and Adani Data Networks also grab significant shares. Reliance Jio has already achieved several milestones, including the rollout of the largest 4G network in the shortest period of time. India has some of the most affordable internet prices in the world, and a diversified telecom sector has played a key role in this. India's 5G push also coincides with its immediate goal of becoming a $1 trillion digital economy by 2025, which experts believe will require transformation of India's digital infrastructure on a massive scale. While experts have expressed confidence in the country's digital capability, they say that 5G would provide optimal speed that India needs to achieve in order to become a major digital competitor. After 3 years and beyond 5 years, I think this 5G process could add to the development and growth of digital India. India's economy is poised for a quantum leap with an early adoption of 5G technology. Only a few weeks ago, Indian Prime Minister Narendra Modi had said that next-generation mobile broadband technology would transform lives and boost India's economy by 450 billion USD in the next 15 years. In addition to better comprehensive services for consumers, 5G will also enable Indian security forces to equip themselves with better communication technology in the face of an aggressive and expansionist China. For now, it is a moment of pride for the entire nation, which is taking giant leaps in its digital journey, further strengthening brand India. At the end, we bring you a few short stories about the recent developments and happenings from around the world in our section of World in Focus. Paddle boarders crowded the central canals of St. Petersburg for the annual Paddle Board Festival, marking its 7th anniversary. Замечательно, я очень довольна, что приехала. Я приехала из другого города сюда к вам участвовать. И готовились, мы готовились, наверное, пару недель, придумывали костюмы, чтобы мы были с подружкой в одинаковых такие. Я морячка, я моряк, или ты моряк. В общем, да, такая морская тема у нас была. Я уже участвую 3-й раз, и прям очень довольна сегодня. С погодой повезло, и народу было очень много, и прям все замечательно. According to the organizers, over 5,000 people registered to take part in the event, making it the largest of its kind. Paddle boarding became increasingly popular in central Russia over recent years, although there are no seas nearby. Enthusiasts sail on many lakes, rivers, and the city's water ponds. Japanese company Rinnai has introduced a new showroom in Nagoya, where the headquarters of the company are.
Renai is a global manufacturing firm that supplies water heaters, kitchen appliances, air conditioning, bath facility, and other machineries that would help in living a healthy and a comfortable life. It's been more than 100 years that Renai has launched its gas supplies line, which has different products like a gas stove, oven, water heaters, and others. "熱と暮らし」というですね、大きなテーマに対して、もう一つ健康と暮らしという2つのテーマ、これを掲げまして、生活の質の向上と、やっぱり世の中の人々に対して豊かで快適な生活を提供していく。The expertise and experience of Renai guarantees a comfortable and a healthy life, along with contributing to reduction in carbon emission. Five Egyptian students have won first place in a global healthcare design competition for a non-invasive glucose monitoring device. The students from the American University in Cairo, AUC, say the GlucoClip aims to serve as a substitute for finger pricking or other invasive blood tests, potentially influencing lives of millions of diabetics around the world. الجهاز ده هو شبه الجهاز بتاع الأكسجين اللي بيقيس أكسجين في الدم. المفروض اللي بيقيس بيحط صباعه جوه الجهاز، ويا إما بيضغط على الزرار اللي هنا أو بيستخدم موبايل أبليكيشن بتكون متوصلة بالجهاز عن طريق البلوتوث. من ساعة لما بيدوس على الأبليكيشن بيبتدي الجهاز يقيس، ياخد القراءات عشان يقيس السكر في الدم، والقراءات بتظهر على الشاشة على طول، وبتظهر برضو على التليفون على الأبليكيشن. على الابلكيشن تقدر تشوف القياسات السابقه، يعني تشوف الهيستوري بتاعك، وتقدر تشوف على جراف، يعني تقدر تشوف شكل الهيستوري بتاعك عامل ازاي. The device uses near-infrared spectroscopy and connects to a mobile app, allowing easier and more convenient monitoring of blood glucose levels. The device won first place in 2022 Johns Hopkins Healthcare Design Competition in the Digital Health track. Students say they hope more tests will be done on the device to release it on the market. Shaping and developing metaverse experiences has become a key component in global business. Developing, making 3D virtual spaces for businesses is reforming enterprises, along with achieving a milestone in artificial intelligence with each passing day. This is a virtual space that recreates major tourist attractions in Tokyo, Japan. Users can freely walk around places like Akihabara, which is known as Electronic Town, and an old traditional shrine, along with enjoying the scenery and shopping. After the invention of Internet and Social Networking Services (SNS), the invention and upgradations in the metaverse technologies is attracting investments and users from around the world. That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@anin.com. I'm your host Hina Joshi. It's goodbye from the entire production team.